Namaskar students, I'm MSc in ND first sem and MSc FT first sem. Today's session topic of your course, Nutrition Biochemistry, is lipoproteins, its functions and its metabolism. So in previous session we have discussed about the lipoprotein and its type, and now in this session we will individually talk about कौन सा हमारा lipoprotein है, जैसे LDL है, VLDL है, chylomicron है, LDL है, तो इसके बेसिक क्या फंक्शंस होते हैं और क्यों ये रिक्वायरमेंट इसकी होती है बॉडी में. सो स्टार्टिंग विद VLDL, दैट इज योर वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. सो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करते हैं, इट ट्रांसपोर्ट द इंडिजीनियस ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल्स. ठीक है. इट्स फंक्शन एज द बॉडी इंटरनल पार्ट transport mechanism for lipids. In addition, it serves as a long range of transport of hydrophobic intracellular messenger like morphogen. Now its metabolism. VLDL metabolism is very similar to chylomicron metabolism. That is, the main lipid found in VLDL is also a triacylglycerol. But in case of triacylglycerol, come from the excess fatty acid on diet or an increase of hepatic synthesis of fatty acids as a consequence of excess carbohydrate in diet. Fat coming from the hepatocytes uptake of chylomicron ruminates as the also act as the source of triglycerols for VLDL. And now we will talk about like LDL. LDL क्या होता है? LDL, it is formed from the degradation of very low density lipoprotein. It is formed by the VLDL source. Its size is generally 25 to 35 nm in diameter and contain primarily a range of triglycerols and cholesterol ester. Its function is to enable fat and cholesterol to move within the water-based solution of the bloodstream. Second, each native LDL particle consists of protein that enrich the various fatty acids, enabling as the water-soluble particles. These fatty acids travel in the aqueous blood environment as part of a fat transport system within the body. Now its metabolism. VLDL is large triglyceride-rich lipoprotein secreted by the liver that transport triglyceride to adipose tissue and muscle. The triglyceride in VLDL are removed in capillary by the enzyme lipoprotein lipase, and VLDL return to the circulation as a smaller particle with the new name intermediate density lipoprotein. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट कि क्या हमारे लाइपोप्रोटीन हमने अभी तक बात करी कि कैसे होता है. अब एस्टिमेशन अगर हम देखें लाइपोप्रोटीन का, ऐसे हमने LDL पढ़ा, VLDL पढ़ा, तो दिस इज ऑल विद योर लाइपोप्रोटीन पार्ट. इसमें हमारे काइलोमाइक्रोन्स भी आते हैं. काइलोमाइक्रोन्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स. तो जैसे अगर लाइपोप्रोटीन का कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. तो काइलोमाइक्रोन में भी अगर हम बात करें तो काइलोमाइक्रोन आपके लाइपोप्रोटीन होते हैं जिसमें आपकी ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, काइलोमाइक्रोन. ठीक है. काइलोमाइक्रोन जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, द एंजाइम लाइपोप्रोटीन लाइपेज विथ protein and its cofactor hydrolyzes the chylomicron triglyceride, allowing the delivery of the free fatty acid to muscles and adipose tissue. So this is all with the session of the lipoprotein and its introductory and its type. In case of any doubt, we will discuss in our live class. And thank you for this class.